Assalamu alaikum students. I am Sadaf Khan from ELearnLodhran. Today our chapter is chapter number 12. Topic is Water is a lovely thing. This is a poem. There are some pre-reading questions. Why water is important for our life? Water is important to us in the following ways. Plants and animals drink it. Plants, it helps the growing of vegetables, and it used for washing our clothes and cooking also. It is used in cooking. That's why water is very important in our life. What are the source of water? Following are sources of water: rainwater, surface water, underground water. Now I am going to start translation of stanza number 1. Water is a lovely thing, dark and ripply in a spring, black and quiet in a pool, in a puddle, brown and cool, in a river, blue and gay, in a raindrop, silver grey, in a fountain, flashing white. Writer describes many colors of water in different ways. शायर जो है वो हमें पहले स्टैंजा में पानी के बारे में बताता है, पानी के रंगों के बारे में बताता है कि किस तरह से पानी के कलर्स जो हैं वो तब्दील होते हैं. पानी एक बहुत प्यारी चीज़ है. चश्मे में गहरी और लहरों वाला होता है, गहरी रंगत वाला और लहरों वाला होता है. तालाब में स्याह और पुरसकून होता है. जोहड़ में भूरा और ठंडा होता है. दरिया में नीला और चमकीला सा होता है. बारिश के कतरे में ये चांद जैसी सुरमई रंगत का होता है और फवारे में सफ़ेद चमक वाला होता है. देयर इज़ अ मिड क्वेश्चन, वेयर इज़ अ वाटर ब्राउन एंड कूल. अब शायर पूछता है पानी कहाँ. शायर ने हमें यहाँ इस स्टैंजा में बताया है कि पानी कहाँ ब्राउन और कूल होता है. वाटर इज़ ब्राउन एंड कूल इन अ पडल. जो पानी का जो जोहड़ होता है उसमें भूरे रंग का और ठंडा होता है. इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट, इन अ पिच फ्रॉस्टी कोल्ड. अब ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं शबनम के कतरों को. शबनम के कतरे में शफाफ जगमगाहट वाला होता है और घड़े में ये यख ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ड्यू ड्रॉप. ड्यू ड्रॉप क्या होते हैं? वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स दैट अपेयर्स ऑन लीव्स ऑफ ग्रास इन द मॉर्निंग. स्टैंजा नंबर 2. इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड, इन अ हैप्पी समर सी, जस्ट एज ग्रीन कैन बी, इन अ रेनबो फार अनफर्ल्ड, every color in the world, all the year, from spring to spring, water is the lovely thing, loveliest thing. loveliest thing पे यहाँ पे राइटर जो है इसका पानी को एक उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी अच्छाई है, उसको उसका लेवल नेक्स्ट कर देता है. उसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद बढ़ा देता है. एक बुलबुले में गुलाबी और गोल्डन होता है. इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड. जब वो एक बुलबुले की मानित होता है तो उसका रंग गुलाबी और गोल्ड कलर में होता है. इन हैप्पी समर सी, मौसम गर्मा में खुशियों भरे समंदर में, ये इतना सब्ज़ होता है कि जितना सब्ज़ हो सकता है. दूर फैली हुई कौसे कज़ा में लहराता हुआ, दुनिया का हर रंग लिए हुए, सारा साल बहार से बहार तक, सबसे प्यारी चीज़ पानी है. What are the colors of rainbow? कौसे कज़ा के रंग कौन कौन से होते हैं? Rainbow consists of 7 colors: violet, green, orange, yellow, red, indigo, blue. Now what is the summary of the poem? This poem tells us the importance of water. The poet describes various forms of water. Different reservoirs of water are present on earth. In each water source, water has different forms, shapes and taste. But in each form it is important for life. Chapter number 10. Chapter number 12 has been completed. Thank you.